हेलो गाइस, एलोपैथिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एस्कॉरिल डी प्लस सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्कॉरिल डी प्लस सिरप, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय जेनमा Pharmaceutical Limited. It is stored below 30 degrees Celsius. It comes under 129 rupees and it is easily available at your nearby medical shop. Now हम इसका कंपोजिशन देखते हैं। It contain phenylpherine 5 mg, chlorphenamine metaid 2 mg, dextromethorphan and hydrobromide 10 mg. Now हम इसका मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं। Ascoril D plus syrup is a sugar-free syrup and it is a combination medicine. It is used for dry cough. It relieves allergic symptoms such as sneezing, running nose, watery eyes, and throat infection. It also provides relief for congestion or stiffness in the nose. Now हम इसके benefits देखते हैं। Benefits of Ascoril D plus syrup. It is mainly used for dry cough. A dry cough is also known as non-productive cough. Okay, this cough is this cough where no mucus is produced. This is irritating in your tickly throat, like गले में थोड़ी खराश हो सकते हैं. Is mainly caused due to your cold, cough, flu, allergy और throat irritation की वजह से. This syrup is a sugar-free syrup. It suppresses the dry cough and the hacking cough. It also relieves the allergic symptoms like watery eyes, sneezing, running nose, or throat irritation. It help you to carry out your daily activities more easily. Okay. देन हम इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। अब हमें देखते हैं इसे किस तरीके से लेना चाहिए। दिस मेडिसिन इज टेकन इन द डोज एंड द ड्यूरेशन एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर। चेक द लेबल फॉर डायरेक्शन बिफोर यूज। मेजर इट विथ अ मेजरिंग कप। शेक वेल बिफोर इट यूज। एस्कॉरिल डी प्लस सिरप is a sugar-free syrup, may be taken with or without food, but it is better to take it at your fixed time. Thank you for watching my full video.